This video is on the Arab Spring and Islam. In this video, we'll be exploring the relationship between Islam and the Arab Spring, as well as the impact that this historic event had on the Arab world. The Arab Spring was a series of uprisings and protests that began in Tunisia in December 2010 and quickly spread throughout the Arab world. The protests were sparked by a number of factors, including high unemployment, corruption, and political repression. The protests were largely peaceful, but in some countries, they turned violent, leading to the overthrow of long-standing authoritarian regimes. ये वीडियो अरब बहार और इस्लाम पर है। इस वीडियो में हम इस्लाम और अरब बहार के दरमियान ताल्लुकात के साथ साथ इस तारीखी वाक़ये के अरब दुनिया पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लेंगे। अरब बहार बगावतों और मुजाहिरों का एक सिलसिला था जो दिसंबर 2010 में ट्यूनिस से शुरू हुआ और तेजी से पूरी अरब दुनिया में फैल गया। ये मुजाहिरे बहुत से अवामिल की वजह से हुए जिनमें बेरोजगारी, बदउनवानी और सियासी जबर शामिल हैं। मुजाहिरे बड़ी हद तक पुरअमन थे, लेकिन कुछ ममालिक में वो पुरतशद्दुद हो गए, जिसके नतीजे में देरीना आमिराना हुकूमतों का तख्ता उलट गया। One of the most striking features of the Arab Spring was the prominent role that Islam played in the uprisings. In many of the countries affected by the Arab Spring, Islam is the dominant religion, and it was often used as a rallying cry by protesters. One of the most high-profile examples of this was in Egypt, where the Muslim Brotherhood played a key role in the protests that led to the ousting of President Hosni Mubarak. The Muslim Brotherhood is a conservative Islamic movement that has been active in Egypt for decades, and it has long been critical of Mubarak's regime. During the protests, the Muslim Brotherhood provided food, medical care, and security for protesters, and it played a key role in organizing the demonstrations. अरब बहार की सबसे नुमायां खुसूसियात में से एक नुमायां किरदार था जो इस्लाम ने बगावतों में अदा किया। अरब बहार से मुतासिर होने वाले बहुत से ममालिक में इस्लाम गालिब मजहब है और इसे अक्सर मुजाहिरीन की तरफ से एक रैली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसकी एक आला तरीन मिसाल मिस्र में थी, जहां इख्वान अल मुस्लिमून ने सदर हुस्नी मुबारक को माजूल करने वाले मुजाहिरों में कलीदी किरदार अदा किया। इख्वान अल मुस्लिमून एक क़दामत पसंद इस्लामी तहरीक है जो मिस्र में कई दहाइयों से सरगर्म है और ये तवील अरसे से मुबारक की हुकूमत पर तनकीद करती रही है। मुजाहिरों के दौरान इख्वान अल मुस्लिमून ने मुजाहिरीन को खुराक, तिब्बी देखभाल और सिक्योरिटी फराहम की और उसने मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करने में कलीदी किरदार अदा किया। The Muslim Brotherhood's involvement in the Arab Spring led to some concerns in the West about the role of Islam in the uprisings. Some commentators argued that the Arab Spring represented a clash of civilizations between Islam and the West and that the uprisings could lead to the rise of Islamic extremism in the region. However, these concerns were largely unfounded. While Islam played a prominent role in the Arab Spring, the uprisings were largely driven by a desire for political and economic reform, rather than a desire to establish Islamic states. Indeed, many of the protesters who took to the streets were secular and liberal, and they rejected attempts by Islamist groups to hijack the uprisings for their own purposes. इख्वान अल मुस्लिमून की अरब बहार में शमूलियत ने मगरिब में बगावतों में इस्लाम के किरदार के बारे में कुछ खदशात का बाइस बना। कुछ मुबस्सिरीन का कहना था कि अरब बहार इस्लाम और मगरिब के दरमियान तहजीबों के तसादुम की नुमाइंदगी करती है और ये बगावत खित्ते में इस्लामी इंतहा पसंदी को जन्म देने का बाइस बन सकती है। ताहम, ये खदशात बड़ी हद तक बेबुनियाद थे। जबकि इस्लाम ने अरब बहार में नुमायां किरदार अदा किया, बगावतें ज़्यादातर इस्लामी रियासतों के क़याम की ख्वाहिश के बजाय सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहात की ख्वाहिश से चलती थी। दरहकीकत, सड़कों पर आने वाले बहुत से मुजाहिरीन सेकुलर और लिबरल थे और उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्लाम पसंद गिरोहों की बगावतों को हाईजैक करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। Despite these concerns, the Arab Spring had a profound impact on the Islamic world. It gave a voice to millions of people who had long been marginalized by authoritarian regimes, and it led to the downfall of several dictators who had ruled their countries for decades. It also paved the way for the establishment of more democratic governments in the region, although progress in this regard has been uneven.
ان خدشات کے باوجود عرب بہار کے عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو آواز دی جو طویل عرصے سے آمرانہ حکومتوں سے پسماندہ تھے، اور اس نے کئی آمروں کے خاتمے کا باعث بنا جنہوں نے کئی دہائیوں تک اپنے ملکوں پر حکومت کی۔ اس نے خطے میں مزید جمہوری حکومتوں کے قیام کی راہ بھی ہموار کی، حالانکہ اس سلسلے میں پیش رفت ناہموار رہی ہے۔ Overall, the relationship between Islam and the Arab Spring was complex and multifaceted. While Islam played a prominent role in the uprisings, it was just one of many factors that contributed to the protests. The uprisings were driven by a desire for political and economic reform, rather than a desire to establish Islamic states. The Arab Spring had a profound impact on the Islamic world, giving a voice to millions of people who had long been marginalized by authoritarian regimes and paving the way for more democratic governments in the region. مجموعی طور پر اسلام اور بہار عرب کے درمیان تعلق پیچیدہ اور کثیر جہتی تھا۔ جبکہ اسلام نے بغاوتوں میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن یہ بہت سے عوامل میں سے صرف ایک تھا جس نے احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ بغاوتیں اسلامی ریاستوں کے قیام کی خواہش کے بجائے سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی خواہش سے چلائی گئیں۔ عرب بہار کا اسلامی دنیا پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو آواز دی جو طویل عرصے سے آمرانہ حکومتوں کے ہاتھوں پسماندہ تھے، اور خطے میں مزید جمہوری حکومتوں کی راہ ہموار کی۔